Dear student, welcome to the class of English, and you know that we are studying now chapter number 10. In the previous period, we have seen the first part of this lesson. The name of lesson is the story of cricket. In this, we have seen in first part that from where the cricket is really origin, then what are the two peculiarities of cricket, what are some main equipments of cricket, that is bat and ball. The two peculiar, the what kind of bat was there in the beginning, you can see in the picture, just like a hockey stick, and then gradually it was in the form which we are using now. Then two peculiarities means the cricket can go for 5 days, can be played for 5 days and even result in draw. Then it has its ground is not specified, no dimension is specified, no shape is specified. Some grounds are big, some are small, some are circular, some are like oval. And what are the some primary rules which is started in making in the years of or 18th century, and how then ball started throwing or bowling overarm, and due to the overarm bowling, how the bowler get the batsman, and due to that the change in the shape of the bat is occurred. This is the photo of Melbourne Cricket Club, that is in Australia, of 1874. And then we have seen about what type of equipments are used in cricket. That is, main equipments are bat and ball, in which are made from natural things and almost handmade, whereas the other stick and ball games, just like a golf or tennis, in that some industrial making things are there, and they are influenced by the some invention which is done in the game, in that game, means racket, size of racket is changed, or material of the racket is of the industrial made. Then ball is also made in industries, whereas in cricket all other things are bat and ball manually are, what we can say, that is handmade and from natural material, whereas some protective equipments we have seen in the last paragraph, that protective equipments, pad, gloves, they are made from vulcanized rubber, and also the helmets, which is also made out of metal and some synthetic lightweight materials. I also send the question answer of this comprehension check 1, and now we are going to start part 2 and part 3 togetherly, and I also send the answer of all the exercise you have to note down in your CW. Here now I am going to start the reading of part 2. The origin of Indian cricket are to be found in Bombay, and the first Indian community to start playing the game was the small community of Zoroastrians, the Parsis. Zoroastrians means the Parsi who is following the religion Zoroastrians. Okay? And Parsi, that Parsi are in very small number here we have in India, but though they are the first started playing cricket, and it is being started in Bombay now, which is known as Mumbai. In those days it was known as Bombay. Now, why the Parsis are the first to start playing cricket? Why? That reason is also given here. The Parsis brought into the close contact with the British because of their interest in trade, and the first Indian community to westernize. The Parsi founded the first Indian cricket club. I'm going to read that afterward. But here, what is the reason that Parsi started first? Because they were interested in trade, and as they were interested in their trade, they are in contact of British people. As they are in contact of British people, you know that
अब जिसके साथ में हम रहते उसका कुछ ना कुछ तो असर हमको होता ही है ना। तो ब्रिटिशरों का उन असर सबसे पहले यदि किसी भी कम्युनिटी पर हुआ इन इंडिया, इट वॉज पारसी, and that Parsi community is the first to be westernized. And Parsi founded the first Indian cricket club, the Oriental Cricket Club in Bombay in 1848. Parsi clubs were funded and sponsored by Parsi businessmen like Tatas and the Wadias. The white cricket elite in Indian offered no help to the enthusiastic Parsis. Britishers no help Parsis to playing cricket or provide some ground or anything. Only who are helping the many businessmen such like Tatas and the Wadias, they are also of Parsi community. They help Parsi to play cricket. In fact, there was a quarrel between Bombay Gymkhana, a white-only club, and Parsi cricketers over the use of a public park. The Parsis complained that the park was left unfit for cricket because the polo ponies of the Bombay Gymkhana dug up the surface. उस वक्त पोलो भी खेला जाता था. आई टोल्ड दैट इन स्टिक एंड बॉल गेम्स पोलो ऑल्सो देर. अब पोलो कैसे खेलते थे? पोनी पर टू हैविंग राइड ऑन पोनी with a stick they are taking ball to the goal post of the rivalry team. Okay, so pony were used, and as the pony were there in the polo, when pony runs on the ground is being dug because of they are running. So Bombay Gymkhana, there was a rivalry, or Parsis complained that they are not getting proper place to play cricket, because Bombay Gymkhana dug up the surface of the Bombay Gymkhana dug up because of the polo ponies. When it became clear that the colonial authorities were prejudiced in favor of their white compatriots, the Parsis built their own Gymkhana to play cricket in. Here compatriots meaning given to you, that is fellow countrymen, means compatriots. तो हुआ क्या कि जब पारसी को पता लग गया कि भाई ब्रिटिशर्स आर प्रिजुडाइज इन फेवर ऑफ देयर वाइट कंपेटेरियट्स, वो तो जो वाइट पीपल है उन्हीं को मदद करेंगे खेलने के लिए. देन पारसी बिल्ड अप देयर ओन जिमखाना टू प्ले क्रिकेट इन. द राइवरली मीन्स टू बी अगेंस्ट ईच अदर, एनिमी. राइवरली जो सामने सामने खेलते हैं या तो किसी वजह से जो आमने सामने आ जाते हैं उसको राइवरली कहते हैं. द राइवरली बिटवीन द पारसीज एंड द बॉम्बे जिमखाना. यहाँ बॉम्बे जिमखाना और पारसी के बीच में थोड़ी दुश्मनावट थी, या तो वी कैन से कंपटीशन थी क्रिकेट खेलने की. सो द राइवरली बिटवीन द पारसीज एंड द बॉम्बे जिमखाना हैड अ हैप्पी एंडिंग फॉर दिस पायोनियर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट. A Parsi team beat the Bombay Gymkhana at cricket in 1889. Just 4 years after, they will read here, you can see the photo of this cricket team. The Parsi team, the first Indian cricket team to tour England in 1886. Note that along with the traditional cricket flannels, दे वेयर पारसी कैप. तुम देख सकते हो सब ने पारसी कैप पहनी हुई है. मीन्स दिस ऑल आर पारसी एंड दे आर द पायोनियर ऑफ क्रिकेट इन इंडिया. द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. जस्ट 4 years बिफोर द फाउंडेशन ऑफ just 4 years after the foundation of the Indian National Congress in 1885, an organization that was lucky to have among its early leader the great Parsi statesman and intellectual दादा भाई नौरोजी. तो ये जो बात हो रही है वो कि भाई जब भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो आज कांग्रेस के नाम से जानी जाती है, एक पार्टी इन विच सम अदर लीडर्स आर देयर, गांधी जी और लोकमान्य तिलक और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल, दीज आर ऑल
worker or members of Indian National Congress, and they fight against the Britishers for our independence. But in that Indian National Congress also, the early leaders of that Indian National Congress were many leaders are there, among them Dadabhai Nauroji, the great Parsi statesman and intellectual, was one of the leader of Indian National Congress. Modern cricket is dominated by test and one-day internationals played between national teams. The player who become famous, who live on in the memories of cricket's public, are those who played for their country. The players Indian fans remember even now are those who were fortunate enough to play टेस्ट क्रिकेट. मीन्स यहाँ पर क्या बात हो रही है कि भाई नाउ व्हाट इज द मोस्ट टू टाइप ऑफ क्रिकेट वी आर प्लेइंग, दैट टू टाइप ऑफ गेम्स, दैट इज मोस्टली टेस्ट or one day international. Okay, T20 is also now there. But when this lesson was written down, it was a time of only test and one day international. तो ये सारे फेमस है, वन डे इंटरनेशनल एंड टेस्ट, ये दो फॉर्म में क्रिकेट खेला जाता है. और उसमें भी लोग किसको याद रखते हैं? टू द हीरोज हु प्लेड इन टेस्ट क्रिकेट एंड वन डे इंटरनेशनल. सो उनको जो है वो हम याद रखते हैं. हियर वी रिमेंबर इवन नाउ आर दोज हु वेर फॉर्चुनेट इनफ टू प्ले टेस्ट क्रिकेट. टेस्ट क्रिकेट में जो खेले, आपको शायद सुनील गावस्कर ये सब याद होगा, आपको ये याद नहीं होगा. आपकी अभी की जनरेशन को ज़्यादा कौन याद रहेगा? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ऋषभ पंत. दीज आर द क्रिकेटर्स to whom you are watching now playing cricket, different type of crickets. But in my time, there was Sunil Gavaskar, Vishwanath Anand, Dilip Vengsarkar, Mohinder Amarnath, such a cricketers. Before me, C.K. Naidu, Ajit Wadekar, Bishan Singh Bedi. So, to whom the people remember, to whom they have watched playing cricket, either in test or in one day cricket match. C.K. Naidu, an outstanding Indian batsman of his time, lives on in the popular imagination when some of his great contemporaries like Palwankar Vitthal and Palwankar Balu have been forgotten. C.K. नायडू को आज भी इंडियन क्रिकेट में याद रखा जाता है. C.K. नायडू के नाम की ट्रॉफी भी खेली जाती है, जैसे देवधर ट्रॉफी है, C.K. नायडू ट्रॉफी भी है. तो वो याद है. क्यों याद है? क्योंकि C.K. नायडू वॉज द फर्स्ट इंडियन कैप्टन, इंडियन टीम कैप्टन. जबकि उन्हीं के साथ खेलने वाले कंटेम्पररीज मीन्स दोज हु हैव प्लेड विथ हिम, पलवानकर विठल और पलवानकर बालू, इन सबको हम भूल गए क्योंकि उनको कोई ऐसा कोई पोजीशन वहाँ पर मिला नहीं था. दे वर प्लेइंग विथ देम बट दे आर नॉट इन इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम. सो दे फॉरगॉटन, they have been forgotten. Even though Naidu was past his cricketing prime when he played for India in his first test match against England starting in 1932, his place in India's cricket history is assured because he was the country's first test captain. C.K. नायडू जब 1932 में एज फर्स्ट क्रिकेट टेस्ट मैच खेले इन वर्सेस इंग्लैंड इन 1932, तब वो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे. बस खाली इसीलिए वो याद है क्योंकि वो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे. बाकी उनका जो क्रिकेट खेलने का जो खास टाइम था वो तो चल बसा था. ही वॉज नॉट वेरी गुड प्लेयर ड्यूरिंग दैट टाइम बट ही इज रिमेंबर्ड टिल नाउ बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम. इंडिया एंटर द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1932. सी, अभी तक इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है,
लेकिन बिफोर इंडिपेंडेंट इंडियन क्रिकेट हैज स्टार्टेड प्लेइंग अगेंस्ट इंग्लैंड एंड अदर कंट्रीज. So India entered in the world of Test cricket in 1932, a decade and a half before it becomes an independent nation. This was possible because Test cricket, from its origin in 1877, was organized as a contest between different parts of the British Empire, not sovereign nation. तो ये पॉसिबल क्यों होगा? क्योंकि इन 1877 जो ऑर्गेनाइज था क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम इट्स ओरिजिन्स in 1877 was organized as a contest between different part of British Empire. तुम लोग जानते हो कि ब्रिटिश एम्पायर उन दिनों में दुनिया के कई देशों पर राज करता था. मीन्स ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो अंडर इट्स क्लचेस. वेस्ट इंडीज, द आइलैंड्स ऑफ द वेस्ट इंडीज, दे आर ऑल्सो अंडर रूलिंग ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. सो ये सब कंट्री आपस में खेलते थे. It was not a game played among the sovereign nation. It was a contest between the different part of the British Empire, not sovereign nation. The first test was played between England and Australia when Australia was still a white settler colony. Similarly, the small countries of Caribbean that together make up the West Indies team were British colonies till well after the Second World War. So here part 2 is going to over. Here some true or false is there. I am going to send you answer in the PDF. But if you are interested, you try to think about yourself that whether the given statements are true or false. India joined the world of Test cricket before independence. True or false? Before independence, yes, true only. Okay, so in this way you can go with your own answer by reading and understanding the lesson. But in part 2, what we have seen that how the cricket is being started in playing in India, who were the pioneer cricketer of India. Now part 3, how the cricket is changed in this time. What are the major थिंग विच अफेक्टेड क्रिकेट, क्यों क्रिकेट इतना पॉपुलर हो सका, ये सब की बात अब थर्ड पार्ट में है. टेलीविजन कवरेज चेंज्ड क्रिकेट. इट एक्सपांडेड द ऑडियंस फ्रॉम द गेम बाय बीमिंग क्रिकेट इनटू स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस. इट ऑल्सो ब्रॉडन्ड क्रिकेट सोशल बेस. Children who had never previously had the chance to watch international cricket because they lived outside the big cities could now watch and learn by imitating their heroes. तो अभी क्या है कि you know that now each and everything is broadcasted directly to home through the satellite. पहले पॉसिबिलिटी नहीं थी. पहले तो मेट्रो बिग सिटीज़ में जहाँ पर टेलीविज़न सेंटर्स थे वहाँ पर इसका ब्रॉडकास्टिंग होता था. एंड द पीपल हु आर लिविंग देयर इन मेट्रो सिटी आर एबल टू वॉच क्रिकेट ऑन द टीवी सेट. बट नाउ इट इज स्प्रेड ऑल ओवर वेरी वाइडली. सो इट इफेक्ट द सोशल बेस. अभी ऐसा नहीं है कि भाई मेट्रो सिटी में ही क्रिकेट खेला जाता है, मेट्रो सिटी वाले को क्रिकेट के बारे में पता है. अभी तो गाँव के छोटे छोटे बच्चे को भी मालूम होता है कि क्रिकेट क्या है, क्रिकेट किस तरह से खेलते हैं, है ना, ये सब. एंड दे लर्न हाउ बाय इमिटेटिंग देयर हीरोज एंड दे वॉच देम प्लेइंग इन द डिफरेंट गेम ऑफ द क्रिकेट, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द क्रिकेट. 2020 में किस तरह से खेलते हैं, कौन कौन खेलता है, कैसा खेलता है, क्या किस तरह से बॉलिंग डालते हैं, कोहली कैसा शॉट मारते हैं, हेलीकॉप्टर शॉट क्या है, ये सब छोटे छोटे बच्चे को भी मालूम है. यू ऑल्सो नो वाई, बिकॉज यू आर गेटिंग चांस टू वॉच क्रिकेट ऑन टेलीविजन सेट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. The technology of satellite television and the worldwide reach of multinational television companies created a global market for cricket. Matches in Sydney could now be watched live in Surat. सिडनी में मैच खेला जाता है ऑस्ट्रेलिया में,
जहाँ सुबह 5 बजे क्रिकेट चालू होता है, इतना दूर है हमसे. बट इट कुड बी पॉसिबल directly by sitting in Surat because of satellite television. Could be watched live in Surat. Since India had the largest viewership for the game amongst the cricket playing nations and the largest market in the cricketing world, the game center of gravity shifted to South Asia. This shift was symbolized by the shifting of ICC headquarters from London to टैक्स फ्री दुबई. तो आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो भी लंदन में नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है, कि जहाँ पर क्रिकेट ओरिजिन है, जहाँ से क्रिकेट की गेम पैदा होगी, वहाँ पर उसका हेडक्वार्टर नहीं है. उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में. इट इज शिफ्टेड इन साउथ एशिया बिकॉज वाई इन एशिया मेनी कंट्रीज आर प्लेइंग क्रिकेट. इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब खेलते और सब यहाँ के रहने वाले पीपल आर देयर, दे आर मैड आफ्टर क्रिकेट. यहाँ तो क्रिकेट में अच्छा क्रिकेटर को हम भगवान मानने लगते हैं. सो बिकॉज हियर लार्ज व्यूअरशिप इज देयर, सो द ग्रेविटेशन ऑफ क्रिकेट इज शिफ्टेड इन साउथ एशिया. 150 years ago, the first Indian cricketers, the Parsis, had to struggle to find an open space to play in. Today, the global marketplace has made Indian players the best paid, most famous cricketers in the game, men for whom the world is stage. This transformation was made up of many smaller changes. The replacement by the gentlemanly amateur by the paid professional, the triumph of the one-day game as it overshadowed Test cricket in terms of the popularity, the remarkable changes in global commerce and technology. This lesson is written by Ramchandra Guha. He is considered as a very historian and is adapted from chapter number 7 of India and the Contemporary World 1 textbook in history for class 9th NCERT. Okay, so this lesson is from them. At last, what the last paragraph said that एक वो समय भी था कि जब पारसी को इनफ जगह नहीं मिलती थी क्रिकेट खेलने के लिए, they will struggle to find an open space to play in. आज ग्लोबल मार्केट प्लेस हैज मेड इंडियन प्लेयर्स द बेस्ट पेड, क्योंकि आज जो इंडिया का दबदबा है इन क्रिकेट में और इंडियन क्रिकेटर को सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं. दे आर कलेक्टिंग millions of rupees. This transformation was made up many smaller changes. The replacement of gentlemanly amateur. Amateur means क्यों? क्योंकि भाई स्वेच्छा से जो खेलने आते थे. Meaning of amateur means a person who engage in a pursuit, especially a sports, and was unpaid. उनको कुछ मिलता नहीं था, अपनी तरह से खेलने आते थे बस मजा लेने के लिए या तो किसमें कुछ ज़्यादा सीखने के लिए. बट देर इज नो प्लेस फॉर अमेचर नाउ. दे वेर रिप्लेस्ड बाय द प्रोफेशनल. अभी तो क्रिकेट प्रोफेशनल बन गया है. प्रोफेशनल गेम इज देयर. क्रिकेट आर नॉट जस्ट फॉर टाइम पास और फॉर एम्यूजमेंट. इट इज मेड अप, इट इज नाउ ए वन काइंड ऑफ प्रोफेशन, एंड प्रोफेशनल प्लेयर्स आर कमिंग to play cricket and they are getting nice money also. And also the one day game overshadowed the test cricket. आज टेस्ट क्रिकेट किसी को अच्छा नहीं लगता है, वन डे गेम पॉपुलर बन गया है. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस हाउ द टेक्नोलॉजी इज चेंज, हाउ द कॉमर्स, ग्लोबल कॉमर्स इज चेंज. किस तरह से क्रिकेट में ज़्यादा पैसे आए, किस तरह से क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग में ज़्यादा पैसे मिले, इन सब को देखते हुए कौन ज़्यादा फेमस क्रिकेटर है, और वो ज़्यादा फेमस क्रिकेटर यदि हमारा टी शर्ट पहनेगा, यदि वो कहेगा कि बूस्ट इज़ द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, देन तो ये सब चीज़ों के कारण आज हमें क्रिकेट का एक नया रूप देखने को मिलता है. आज से 150 साल पहले जब एक कम्युनिटी पारसी को यहाँ पर खेलने के लिए जगह नहीं मिलती थी, आज पूरे देश में क्रिकेट के दीवाने हैं. सो हियर द लास्ट लेसन इज गोइंग टू ओवर.
And with this, I'm going to send you all the answers in PDF. My dear students, please write down in your CW and learn it, because you have to prepare for the final exam also. So please write down and learn. And next time when we meet, I don't know, but I will give you some paper style and other things, and we'll discuss something how you have to write the paper. Okay. Anyhow, till the time, goodbye. Thank you.